Assalamualaikum. I, Ramaisha Khalid, with my friends Neha Naseem, Manur Jalil, and Filza Tanveer, have prepared this presentation about the co-processed excipients. So, what are co-processed excipients? Co-processed excipients हम उसे कहते हैं जो दो एक्सिपियंट्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इन एक्सिपियंट्स के डिसएडवांटेजेस मिनिमाइज हो जाते हैं और हम लेस क्वांटिटी यूज़ करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ मल्टीपर्पज़ यूज़ ऑफ एक्सिपियंट्स. There are many co-processed excipients, but here I'll be discussing about two co-processed excipients that are Starlag and Combilac. Firstly, I'll be discussing about Starlag. Starlag is the combination of starch and lactose. ये स्पेशली बनाया गया था फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन, लेकिन हम Starlag और दूसरी फॉर्मुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज Starlag हैज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड ब्रिटल प्रॉपर्टीज़, तो हम ड्राई ग्रेनुलेशन में भी Starlag को यूज़ कर सकते हैं. ये फ्लो को इन्हेंस करता है, कॉम्पैक्टिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और लुब्रिकेंट सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है. Now let's discuss about lactose. Lactose as an excipient मशहूर है due to low hygroscopicity, great physical and chemical stability, cost effectiveness, ease of availability, bland taste and water solubility. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट स्प्रे ड्राइड लैक्टोज. स्प्रे ड्राइड लैक्टोज हमारे पास एग्लोमरेशन है टाइनी अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स की, जो कि बाउंड होते हैं बाय अमॉर्फस लैक्टोज दैट इज़ कंप्रेसिबल. लेट्स सी कि ये बनते कैसे हैं. हम लैक्टोज सॉल्यूशन में स्प्रे ड्राइंग करते हैं फाइनली मिड अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स को, जिसकी वजह से क्विक वाटर एलिमिनेशन होती है विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन लैक्टोज इन एडिशन टू क्रिस्टलाइन लैक्टोज. लास्ट पार्ट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ लैक्टोज. अगर हमारे ड्रग का स्ट्रक्चर टूवर्ड्स प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन हो और हम लैक्टोज यूज़ करें तो इट विल कॉज मिलार्ड रिएक्शन, मतलब इट विल कॉज डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स. Now, starch. As we know, starch is common pharmaceutical excipients without smell and toxicity, and it is the most easily accessible and biocompatible excipients. हम लैक्टोज और स्टार्च को इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि स्टार्च कॉस्ट इफेक्टिव है और लैक्टोज को कंबाइन करने से कॉस्ट कम हो जाती है. The second point is about the solid bridges and other binding forces caused by the binding agent, but to dissolve this, starch work as a disintegrant soiling characteristic in the presence of water. Now third point में हम wet granulation में भी starch use कर सकते हैं. Fourth point is about the disadvantage of starch, that it has poor flow which causes variation in uniformity. Starch is used as a lubricant, glycant and absorbent. It is used as an absorbent to keep powder dry by absorbing moisture and preserve the stability of tablets. The last point is about the poor compactability, which is because of absorbent nature by which void spaces are left and causes poor compactability. और इसलिए extended release tablet में हम starch ऐसा excipient use नहीं कर सकते हैं. Here are some differences between starch and lactose which we have already discussed above. Let's proceed forward. As we have discussed, the combination of starch and lactose is Starlag, which has many advantages together. For example, improve compactability, quick tablet disintegration. In direct compression, Starlag offers the compaction and lubricant insensitivity features and superior flowability. Impact on formulation. Here all the mentioned properties of Starlag were discussed in previous slide, so let's move forward. Excellent compactability of a Starlag was already discussed, so proceeding forward. Impact on biopharmaceutical property. First one is disintegration. As I have already told, Starlag has faster disintegration due to the presence of lactose and starch together by causing soiling in the tablet in the presence of water. Second one is dissolution. क्रॉस प्रोडाइन की वजह से hollow और spherical particles बनते हैं which leads to more rapid breakdown. Third point is absorption, which is we have already discussed. Now the last is elimination. लैक्टोज वाटर soluble है तो एलिमिनेट आउट हो जाता है थ्रू किडनी, लेकिन स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में एंड विल रिमेन इन द बॉडी. नाउ कॉम्बिलैक. कॉम्बिलैक लैक्टोज बेस्ड कोएक्सिपिएंट है विद हाई फंक्शनैलिटी. ये सॉलिड डोसेज फॉर्म की प्रोडक्शन को ईजियर बनाने के लिए क्रिएट किया गया है. कॉम्बिलैक इज द कम्बिनेशन ऑफ 3 एक्सिपिएंट्स. अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट whose composition is 70%, second one is microcrystalline cellulose whose composition is 20%, and the last one is white native maize starch with the composition of 10%. ये 3 पार्ट्स मोनो पार्टिकुलेट स्ट्रक्चर में कंबाइन हुए हैं जिनको फिजिकली सेपरेट करना इम्पॉसिबल है. कॉम्बिलैक की सुपीरियर कॉम्पैक्शन क्वालिटीज़ हैं जो रिजल्ट होती हैं स्ट्रॉन्ग टैबलेट विद लो फ्राइबिलिटी.
अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट। अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट जो है एज अ डाइल्यूट और बाइंडर दोनों तरह से यूज़ होता है और हाइग्रोस्कोपिक भी है, यानी कम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और वाटर सोल्यूबल भी है। नाउ द सेकंड पॉइंट, एज अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट फ्लो इज पुअर, तो हम उसको सीव करते हैं 100 मिनट से, देन डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं। its binding ability is low और its flow is poor, so it's mixed with microcrystalline cellulose ताकि इसका flow acceptable हो जाए। as the microcrystalline cellulose increases in the blend, crushing and strength also improves, और इस combination का higher effect होता है disintegration time पे। lastly, as we decreases the size of excipient, tablet की strength बढ़ जाती है। Microcrystalline cellulose. Cellulose in microcrystalline form is known as microcrystalline cellulose. इसका ट्रेड नेम एविसेल है। इसके दो ग्रेड्स होते हैं, pH 101 that is powder and pH 102 that is granule. Its flow is good and its compression characteristic is excellent. अगर एज अ डाइल्यूट इसको यूज़ करेंगे तो कोहेसिव कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी वर्क करेगा। इट इज़ वाइट, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट और इसलिए दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। It has high porosity, so majority of organic solvents cannot dissolve it. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट गुड कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ करें टैबलेट्स में तो प्रॉपर शेप आएगा, प्रॉपर कंप्रेस होगी और हार्डनेस अच्छी होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज ऑल्सो एम्प्लॉयड एज अ डाइल्यूट इन वेट ग्रेनुलेशन। लास्टली, अगर हम मशीन का आरपीएम बढ़ा दें और हमें माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ किया हो टैबलेट में तो कैपिंग हो सकती है। Starch, which we have already discussed in Starlek, so just giving a review about the properties of starch. Starch is used as lubricant and glidance. It has poor compactability and used as adsorbent. Let's jump onto the next slide. Some differences between starch, microcrystalline cellulose, and alpha lactose monohydrate. Moving forward. Impact upon co-processing three excipients. Number one is compactability. After combination of three excipients, Combilect exhibit better compaction. Number two is flowability. It has superior flowability. Number three is disintegration. It guarantees quick hardness independent tablet disintegration for efficient release of the API because of the presence of starch. Number four is compressibility. Microcrystalline cellulose की presence की वजह से excellent compressibility होती है। And lastly, it is the cost effective with low friability. As we have discussed about the two co-processed excipients, which are Starlek and Combilect, here are the references of above mentioned theory. Thank you.